Okay, we are going to start, and before that, need to confirm if you guys are able to see the screen. Can anyone confirm if you are able to see the screen? Can you guys hear me? Yes, sir, we can see the screen. Okay, great, great. Thank you. Thank you very much. Okay, just a very quick recap from last time. Last time we did joint continuous random variables. And when we talk about the joint continuous random variable, we talk about the joint PDF fx of xy. Answers all the probability questions about two random variables x and y. And similarly, you can define the joint PDF for 3 or 4 or more random variables. Okay. We also talked about the marginal PDFs. You can get the marginal PDF of x from the joint PDF by integrating out y from -infinity to infinity. And similarly, if you integrate out x, you will get the marginal PDF of y. We also talked about the conditional distribution of x given y. So I know we all understand that the probability that the capital Y, which is the random variable capital Y, takes a value, fixed value, small y, the probability of that event is 0, but I can still condition on that event. On that event. And this joint, this conditional PDF is given by the joint PDF divided by the marginal PDF of y. This is very similar to the conditional probability expression that we saw, or conditional PMF that we saw. बिल्कुल तकरीबन उसी तरह की चीज है. Don't forget that this is the conditional PDF of x. So it is a PDF of x, but is conditioned on y. ठीक है? So इसमें से, if I use this to find the expected value, remember we can use the PDF to find the expected value. If I use this PDF, this is a PDF. This is a PDF. If I use this PDF to find the expected value, we would be finding the expected value of x given capital Y is equal to small y. So expected value of x hogi given that capital Y is equal to small y. So when capital Y takes a value small y, based on that value, you will be able to find this conditional PDF of x or conditional expectation of x. That would be a function of this small y, depending upon कि ये capital Y कौन सी small y value लेता है, उस पर depending upon you will get different values of PDF, different expected values of x. Okay, so the expected value of x would be dependent upon small y. The conditionally expected value of x would be dependent upon small y. Now, when we talked about conditional PDFs, we also talked about the independence, and we said that independence requires that the joint PDF nicely factors into as a product of the marginal PDFs, and the limits on x and y should also not be mixed with each other. They should also be independent. Okay. So if x and y are to be independent, this relationship is true. And if this relationship is true, then x and y are independent. And then we talked about the PDF of sums of random variables. And how do you find the PDF of sums of random variables? So let's say you have a random variable w, which is x plus y,
I know the PDF of X, I know the PDF of Y. I am interested in the finding the PDF of W. Why? Because I want to answer a probability question about W, or I want to find the expected value of W, or I want to, find anything about W. जो एक PDF के मालूम होने से जो भी सवाल के जवाब आप दे सकते हैं. In fact, PDF tells you everything about the random variable. I want to find the variance of W. I will need the PDF of W. So PDF of W can be found by using the PDF of X and PDF of Y. If X or Y are independent, if X and Y are independent, then we saw that the PDF of W is given by the convolution of the PDFs of X and Y. इन दोनों के जो PDFs हैं उनको आपस में convolve करना है. And there are two ways of doing that. One is graphically, and the other is to do it analytically. In fact, graphically भी करेंगे तो आपको analytical expression तो चाहिए. So I'm going to continue this discussion, and I will talk further about the sums of gamma random variables. And if you recall कि gamma के बारे में हमने क्या कहा था? It was an generalized extension of exponential random variable. What was exponential random variable? Exponential random variable was used to model the time until something interesting happens. The time until a packet arrives on a computer network. The time until a customer arrives at a bank. The time a meteor strikes the earth. Okay. So the time until something interesting happens is generally modeled by exponential random variable. So exponential random variable का हमें PDF पता था कि for exponential random variable, lambda e to the minus lambda x is the PDF. CDF भी होता था 1 minus e to the minus lambda x. Gamma random variable के लिए, for gamma random variable, if x is gamma, if x is a gamma random variable with parameters t and lambda, okay, then the density function of the gamma random variable that we have seen is lambda e to the minus lambda x, वही exponential and something more, and that something more was lambda x power t minus 1 divided by the gamma function of t minus 1. Gamma function of t minus 1 is a constant. Okay. And gamma t is basically t minus 1 factorial, for t taking an integer value, Okay. Now we note that gamma 1 comma lambda, अगर t को हम यहाँ पे 1 put कर दें, in this expression, if I put t is equal to 1, so denominator में gamma of 0, which is defined to be 1, and then in the numerator you will have lambda x power 1 minus 1, which is again 1. So gamma will become exponential lambda. So gamma 1 comma lambda is the same as exponential lambda, and this conforms with our earlier description of gamma. कि exponential lambda क्या होता है? कि exponential lambda is time until something interesting happens. Okay, and the gamma random variable was time until something interesting happens a few times. Until 4 customers appear at a bank.
until 5 packets arrive at a computer network. That is modeled as a gamma random variable. ठीक है, लेकिन अगर हम पहले की बात कर रहे हैं कि time until the first customer arrives at the bank, that is the same thing as exponential. So gamma 1 comma lambda, it is no surprise कि उसकी जो distribution है वो आपके पास exponential distribution की तरह ही बन जाती है. So these two guys are the same when t is equal to 1. When t is equal to 1. Okay. So here is a property of the gamma distribution. For a fixed lambda, gamma distribution is closed under convolutions. What that means is gamma distribution is closed under convolutions. इसका मतलब है कि उन दो को कन्वॉल्व करेंगे gamma functions को, उनके PDFs को, तो you will get another gamma. इसकी एग्जांपल देते हैं. इसकी एग्जांपल है कि if you have a random variable x which is gamma s comma lambda and another random variable y t comma lambda, and these two are independent. If these two are independent, then w is equal to x plus y. Okay, the claim is ये जो ऊपर हमने ये for a fixed lambda, देखें fixed lambda है ये, और fixed lambda पे हमने कहा कि gamma distribution is closed under convolutions. So now revert back to what we said about the sum of independent random variables. तो w का PDF जो है कि PDF of w is the convolution of PDFs of x and y. But x and y, they have the same lambda, and their convolution tells us that the gamma distribution is closed under convolutions. So what that means is that w की जो distribution आएगी, w will also be a gamma random variable. And we can show that by using this distribution. ये जो हमें PDF पता है gamma function का, एक ये PDF लिया, एक और इसी तरह का PDF लिया, और दोनों को convolution किया, and we have a mathematical expression for that from the last lecture. उन दोनों को अगर convolve करें, you will figure out that this is simply s plus t comma lambda. Only works when lambda is constant. दोनों के अंदर same lambda हो. It only works when this lambda and this lambda are the same. Will not work when the lambdas are different. Okay, so this guy w will also have a gamma distribution s plus t comma lambda. Now this intuitively makes sense. Kya? First, I am waiting. X says that I am waiting for the S customers to arrive, and Y says that I am waiting for the T customers to arrive, and X and Y are independent. So if I am waiting for S customers to arrive, that is the time for that is X, and the time for T customers to arrive is independently Y. Okay, then the X plus Y should be the same as waiting time for S plus T customers to arrive. So intuitive sense भी बन रही है इसकी, ठीक है? Except that कि यहाँ पर हमने आपको जो examples दी हैं, वहाँ पे हमने customers बता दी, packets बता दिए, meteors striking the earth बता दिए. Okay, so उससे ये लगता है कि S और T जो हैं वो integers हैं. In fact, if you look at the generalization of exponential, तो ये integer ही होगा यहाँ पे. But gamma distribution is so generalized that you don't even need S and T to be integers. S and T can be non-integers as well. Okay. Now, another example is if
x1, x2, dot, 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 up to xn are independent and identically distributed. Independent and identically distributed. IID, exponential random variables. Each one of them is independent and they are all independent of each other. They are all exponential lambda random variable. Exponential lambda random variables. Then summation of I is equal to 1 to n x I. इन सब का सम जो है वो इन सब के जो पीडीएफ्स हैं वो कन्वॉल्व होंगे. सो दो एक्सपोनेंशियल्स को कन्वॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा गैमा 1 प्लस 1 लैम्डा, फिर उसके अंदर वो गैमा 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर उसमें एक और गैमा 1 कॉमा लैम्डा उसके साथ कन्वॉल्व करेंगे. सो यू विल एंड अप गेटिंग this guy will have a distribution of gamma n comma lambda, gamma n comma lambda. So exponential lambda is the waiting time until the first event to occur. Gamma n comma lambda is the waiting time until n events to occur, and it makes sense that x1 plus x2 all the way up to xn is represented by the gamma distribution. Okay. Now I am going to talk about the sum of normal distributions, normals, sum of normals. ये भी बड़ा आसान है कि if xi's are normal, x1, x2, x3, etc., if these guys are all normals with mean mu I and variance sigma I square. Each of these xi's are normal random variables where I is equal to 1, 2, all the way up to small n. Each of these xi's, x1, x2, x3, x4 up to xn, each of them is normal random variable with mean mu I and variance sigma I square. Okay. And all xi's are independent. What that also means is that now they are IID, independent and identically distributed. Well, they are not actually identically distributed because mean and variance are not the same. For them to be identically distributed, उनका mean variance exactly same होना चाहिए. So not identically distributed, but they are still independent. Okay. Then, once again, we can show that okay, the summation I is equal to 1 to n xi. इन सब को आप sum करें तो ये बहुत सारे आपके पास normally distributed random variables हैं with their own means and variance sigma squares. ठीक है? So sum of all of these also turns out to be normal. इसका कोई मीन होगा और कोई वेरिएंस होगा. इसका कोई मीन होगा और जिसकी कोई वेरिएंस होगी. And this mean here mu is basically the summation of all the means. ये हमें वैसे भी पता है कि if you have x1 plus x2 plus x3, इनकी expected value क्या होती है? इनकी expected value होती है expected value of x1 plus expected value of x2 plus expected value of x3. Okay, और अगर n है तो वो all the way up to n. So ये basically सबके mean जो है वो sum होंगे. What about the variance? Sigma square. इस cumulative की जो variance है, इसकी जो variance है, since all of these are independent, तो हमने पहले देखा था independence के case में, the variance also get added up. So this would also be equal to I is equal to 1 to n sigma I square. So very interesting कि अगर ये normally distributed है, अगर ये independent ना होते, so then I would not have been able to write this. Yeah. Let me just throw in some information here. Even if x1, x2, x3, they are not independent, their sum, we can prove that their sum will still be normal. लेकिन उनके mean variance जो वो ऐसे नहीं calculate कर सकते, वो उसके लिए कुछ और तरीका होगा. That's a bit more complicated. We can figure that out. It's not too difficult. So not going to do that right now. So I'm going to talk about another very interesting distribution which comes up very often, especially into statistical inference. जी question पूछ लें.
सर वो जो हमने लास्ट डेरिवेशन की है वो जो हमने जो की थी w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाली गैमा वाली। जी सर इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो x और y है वो दोनों गैमा वेरिएबल हैं सर, लेकिन नीचे जो हमने वो एग्जांपल की उसमें हम कह रहे हैं कि x1 x2 टिल xn जो है वो IID एक्सपोनेंशियल है विद लैम्डा। जी सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। जी, जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा जो होता है वो एक गैमा रैंडम वेरिएबल होता है, गैमा रैंडम वेरिएबल जिसमें 1 हो। सो गैमा 1 कॉमा लैम्डा इज द सेम एज एक्सपोनेंशियल लैम्डा। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? सर हम जो हमने ऊपर की थी डेरिवेशन x और y वाली, लेकिन सर उसमें हम ये कह रहे थे कि फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा। हाँ जी, लेकिन सर एस और टी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन नीचे जो हमने एग्जांपल की उसमें हम 1 ले रहे हैं, 1 कॉमा लैम्डा ले रहे हैं। इसलिए कि हमने बहुत सारे एक्सपोनेंशियल्स कंसीडर कर लिए ना, एंड एन एक्सपोनेंशियल इज नथिंग बट गैमा 1 कॉमा लैम्डा। फिर एक और गैमा 1 कॉमा लैम्डा आ जाएगा। अगर दो एक्सपोनेंशियल्स हों तो दोनों गैमा 1 कॉमा लैम्डा होंगे, और दोनों को अगर सम करेंगे तो गैमा 2 कॉमा लैम्डा आ जाएगा, बिल्कुल एस प्लस टी हो जाएगा ना। फिर एक और उसमें ऐड करेंगे तो गैमा 3 कॉमा लैम्डा आ जाएगा। सर इसका मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जिस तरह ऊपर एक्स एस और टी था, यहाँ पे हम दूसरे भी आई आई डी अगर लें उसमें अगर 1 कॉमा ना हो, एस ओ टी हो, जो भी हो, तो उसके भी सेम यही निकलेगा। क्या चीज यही निकलेगा? सर जैसे हमने एन की है, एन कॉमा लैम्डा गैमा वेरिएबल आया उनका सम जो है, तो सर जी, अगर वो उसमें फर्ज करें एस ओ टी होते तो उसमें एस टी प्लस डब्ल्यू प्लस बी इस तरह सारे इस तरह हो जाते। मुझे मुझे पता नहीं आप एग्जैक्टली क्या सवाल पूछ रहे हैं, बट एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज नथिंग बट ए गैमा 1 कॉमा लैम्डा। ये चीज क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा जो है वो इज द सेम एज गैमा 1 कॉमा लैम्डा। ठीक है, जी सर ये तो क्लियर। आपके पास अगर x1 है वो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, दैट मींस कि ये इज द सेम थिंग एज गैमा 1 कॉमा लैम्डा। ठीक है, अगर आपके पास x2 है वो भी एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो वो भी एक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी 1 कॉमा लैम्डा है। तो x1 प्लस x2 को अगर कंसीडर करें वो होगा इन दो गैमास का सम, इन दो गैमास का सम। इसका s भी 1 है और t भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉमा लैम्डा, गैमा ऑफ 1 प्लस 1 कॉमा लैम्डा। सो ये गैमा 2 कॉमा लैम्डा हो जाएगा। तो एक और उसमें फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 भी करेंगे, तो x3 जो है वो भी 1 कॉमा लैम्डा है, तो वो उन तीनों का जो सम होगा वो 2 प्लस 1 विच इज 3 कॉमा लैम्डा। तो इसी तरह n को अगर ऐड कर देंगे, n को अगर ऐड कर देंगे तो वो गैमा आपके पास n कॉमा लैम्डा आ जाएगा, राइट? सर सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे 1 की जगह कोई और वैल्यू होती एस टी डब्ल्यू ई कुछ भी में होती, बाकी, कुछ भी होती, तो वो हमने सबको तो ये ऐड ऊपर, करते। हमने तो ऊपर जनरल कह दिया कि s और t के केस में ये s प्लस टी हो जाएगा। s और t को मैं 1 1 भी तो ले सकता हूँ ना यार। जी सर समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है, ओके। जी Now, so another distribution that comes up very often in statistical inference is called the chi-square distribution. Is the chi-square distribution. You might have heard of chi-square tests. वो गुडनेस ऑफ फिट को मालूम करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो chi-square distribution, it's written as chi-square, और यहाँ नीचे इसमें n लिख देते हैं, where n is a parameter जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। So how do I define a chi-square distribution? So consider if zi is a standard normals, and standard normal has a mean 0 and variance 1. Mean 0, variance 1, I is equal to 1 2 dot dot dot. ठीक है, तो मैंने बहुत सारे के z's कंसीडर कर लिए, z1 z2 z3, and all zi's are independent, and now they are IID. Why? Because इनकी जो mean और variance है वो same है, so they have exactly the same distribution. सारे के सारे standard normal हैं और आपस में independent हैं. Then chi-square n distribution is defined as the summation I is equal to 1 to n, zi square. जो normal distribution variable है उसमें sum of the squares of those
This is called a chi-square distribution with n degrees of freedom. N degrees of freedom. N degrees of freedom. Okay. Now, for n is equal to 1, chi1 square is nothing but zi square. So यानी जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसका स्क्वायर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्क्वायर है ये. सो आपको अगर याद हो कि इफ x इज इक्वल टू y स्क्वायर या y इज इक्वल टू x स्क्वायर, हमने कोई इस तरह की एक चीज कंसिडर की थी. So y is equal to x square. If you know the PDF of x and interested in finding the PDF of y, how do we find the PDF of y? वो आप रूट निकालते हैं. x is equal to ये square root of y plus minus होगा. There are two roots for this equation. So x is equal to plus minus y है. And then we can find the PDF of y knowing the PDF of x. ठीक है, ये हमने जब सिंगल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किया था उसके केस में हमने किया था. Okay, so now knowing the PDF of x, you can find the PDF of y. ये बिल्कुल उसी तरह की चीज हो रही है यहाँ पे कि if you know the PDF of zi, उसका स्क्वायर आपने लिया है, and I am interested in finding the PDF of psi1 square, which is y. उसको आप y कह सकते हैं. So y is equal to ये आपके पास x square, and where x is equal to zi. How do you find the PDF of y? उसका प्रोसेस हमने जो है वो सिंगल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हमने मालूम किया था कि PDF, finding the PDF of a function of a random variable, finding the PDF of a function of a random variable. And how do I find here? In this case, if y is equal to x square, then PDF of y is equal to PDF of x. इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं x is equal to plus minus square root of y. कितने सॉल्यूशंस हैं? दो सॉल्यूशंस हैं. So this would be plus square root of y and magnitude of d by dy of square root of y plus square root of y. ये प्लस दूसरा रूट है आपके पास fx of minus square root of y magnitude of d by dy of minus square root of y. This is the PDF of y. ये if you recall हमने ये किया था, अगर भूल भी गए कोई बात नहीं, उसको वापस जाके देख लें नोट्स में. ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ना, ये हमने how to find the PDF of y given the PDF of x, ये हमने पहले किया हुआ. So apply it here. ठीक है, apply it here. यहाँ पे अप्लाई अगर करेंगे, so in a few steps you will be able to find out, जो हमने नोट्स में शो भी किए हुए, you will be able to find out कि psi1 square PDF, इसका जो PDF होगा is given by 1/2. ये इसको वैल्यूज डाल के जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका PDF हमें पता है 1/√2 pi e to the minus x square over 2. उससे हम मालूम कर सकते हैं after a little bit of manipulation, this will turn out to be y/2, 1/2 minus 1 divided by square root of pi. You can find out by using this expression, you can find out that the PDF of psi1 square, which is the chi-square distribution with 1 degree of freedom, उसका PDF ये होता है. But we immediately recognize this as the gamma PDF. ये तो मुझे gamma PDF लगता है. इसको compare with gamma distribution, so you will see कि psi1 square is nothing but a gamma distribution with parameters 1/2 and 1/2, जिसका ये n भी जो है 1/2 है, या t भी जो है वो 1/2 है, और lambda भी 1/2 है. Okay. Now, knowing this, psi n square, which is the chi-square distribution with n degrees of freedom, ये कैसे निकालेंगे? ये हम ऐसे निकालेंगे
कि देखें psi1 स्क्वायर जो है वो z1 स्क्वायर है, ठीक है, psi n स्क्वायर जो है वो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, each one of them is a gamma 1/2 distribution. So this will be equal to simply gamma distribution with n/2 lambda is 1/2. इन सब का lambda 1/2 है और ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 n टाइम्स ऐड करेंगे तो यू विल गेट n/2. यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप किया है इस्तेमाल की जिसमें हमने कहा था कि गैमा s, t और गैमा s, लैम्डा एंड गैमा t, लैम्डा इन दो को अगर ऐड करें, गैमा s, लैम्डा और गैमा t, लैम्डा इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपके पास जो सम की जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी विद पैरामीटर्स s प्लस t, लैम्डा. तो यहाँ पे दो के बजाय आपके पास n है. सो ईच वन ऑफ देम इज गैमा 1/2, 1/2, 1/2, ये लैम्डा है, ठीक है. सो इस तरह के आपके पास n है, उन सब का आपने सम करना है, उन सब का अगर सम करेंगे यू विल एंड अप गेटिंग gamma distribution with n/2 parameter n/2 and lambda which is 1/2. So Awais Hassan, for any fixed value of lambda, well yes, fixed value of lambda, for fixed value of lambda कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. So now I'm going to talk about ये अभी हमने ये एक प्रोसेस इस्तेमाल किया है जिसमें knowing the distribution of x you can find the distribution of y, and this is a topic that we had covered when we were covering the single continuous random variable. Okay? अगर सिंगल के लिए ये function of random variable को कर सकते हैं, can we play the same game with multiple random variables? And now we'll talk about bivariate change of random variables. Bivariate change of random variables. इसमें क्या होगा आपके पास कि if you recall कि if y is equal to some function of x, वही जैसे अभी हमने y is equal to x square consider किया था, then knowing the PDF of x you can find the PDF of y. So then PDF of y is equal to summation I is equal to 1 to k, जितने भी रूट्स हों आपके पास इक्वेशन x is equal to g inverse y के. So जैसे यहाँ ऊपर हमारे पास सिर्फ दो रूट्स थे और यहाँ आपके पास जो है वो मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, हो सकता है एक भी रूट हो, लीनियर इक्वेशन में एक ही रूट होगा. fx of xi d by dy of x such that x is equal to xi. या हमने इसको ऐसे भी लिखा था बाय द वे, summation I is equal to 1 to k fx of xi divided by g prime of xi. G prime, where g is the same function as this one, where x1, x2, dot, 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 up to x capital K are roots of, are solutions of, solutions is probably a better term, solutions of x is equal to g inverse y. ये कोई आपके पास एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल y is equal to x square में आपके पास x square is equal to y के क्या सॉल्यूशन होंगे? x is equal to plus square root of y and minus square root of y, जो ऊपर वाली एग्जांपल में हमने किया. Now extending to multiple random variables. अगर एक से ज्यादा random variables हो तो हम क्या करेंगे वहां पे? Extending to multiple random variables, if you have one random variable y1 which is a function g1 of two random variables x1 and x2, and y2 is another random variable which is yet another function of two random variables both x1 and x2. Okay, for some functions g1 and g2, okay, which satisfy some requirements, कुछ mathematical उसके लिए requirements चाहिए, वो I will skip those, you can take a look at those in the book. So one of the requirements is कि ये functions जो हैं ये inversible होने चाहिए. देखें जिस तरह यहाँ पे y is equal to g of x एक function था, तो हमें x is equal to g inverse y उसके solutions चाहिए थे. So that means कि the function was inversible. Similarly, these functions g1, g2,
have to be inversible. I should be able to express, यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया है y1 को in terms of x1 and x2 and y2 को in terms of x1 and x2. Using these, I should be able to express x1 and x2 in terms of y1 and y2. ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास दो simultaneous equations हैं, उनको आपने solve करना है. उसको आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व कर रहे हैं, क्रैमर मेथड इस्तेमाल करके, या किसी और तरीके से बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लें. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो यू शुड बी एबल टू राइट x1 to be equal to some inverse function, वहां से निकालेंगे h1 of y1 and y2 and x2 as the function of y1 and y2. ठीक है, ये h1 और h2 आपके पास कहां से आएंगे? ये वहां से आएंगे जहां से g1 और g2, उनको यूज करके हम निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे y इज इक्वल टू जी एक्स के केस में x इज इक्वल टू जी इनवर्स y था, तो जी इनवर्स कहां से आया था? वो g को यूज करके हमने जी इनवर्स निकाला था. इसी तरह g1 g2 को यूज करके हम h1 और h2 निकालेंगे. सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज कि ये आपके पास जो है रिवर्सिबल होनी चाहिए. एक और रिक्वायरमेंट है, that requirement is कि this function that I'm going to define, it's called the Jacobian. This guy, which is the partial derivative of g1 with respect to x1, partial g1 with respect to x2, partial g2 with respect to x1, and partial g2 with respect to x2. The determinant of that should not be equal to 0 for all x1 x2. For all x1 x2, this determinant should not be equal to 0. If this condition is satisfied and this condition is satisfied, ये 0 के equal नहीं आता है, ये Jacobian, this is called Jacobian. This does not turn out to be equal to 0, and these two guys are reversible. In fact, ये अगर 0 नहीं आएगा तभी वो reversible होंगे. Then I can find the joint PDF of y1 and y2 in terms of the joint PDF of x1 and x2. ये देखें बिल्कुल जो हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में किया था कि y is equal to function of x, y का PDF हमने मालूम करना है by using the PDF of x. यहाँ पे आप y1 y2 आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हैं in terms of x1 and x2. So I am interested in finding the joint PDF of y1 and y2 in terms of the joint PDF of x1 and x2, and this will turn out to be y1 comma y2 is equal to f of x1 x2 into the Jacobian evaluated at x1 x2 inverse. Jacobian का inverse आपने यहाँ पे, या denominator में वो Jacobian की वैल्यू आ जाएगी. So this determinant will, इसको अगर ये इनवर्स आपने करना है तो ये हटाना है तो ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग ये आपकी x1 x2 प्लेन में से एक पोर्शन है जिसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है y1 y2 के प्लेन के अंदर. तो मे भी कोई जरा डिफरेंट सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बट दिस एरिया will get transformed into this area in the y1 y2 plane. Okay. So sometimes हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ y1 के अंदर होता है, लेकिन हम फिर भी जो है वो y1 और y2 का जॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि वो निकालना आसान होता है, और उसमें से फिर y2 को इंटीग्रेट आउट कर दें तो I can always answer the question about y1. ठीक है. So I'll give you an example, and the example is very simple. y1 is equal to x1 plus x2 and y2 is equal to x1 minus x2. And let's assume that the joint fx1 x2 x1 x2 is known. ये आपको पता है पहले से, ये दिया हुआ है आपको. Okay, and I am interested in the joint PDF of y1 and y2. I am interested in the joint PDF of y1 and y2. ये कैसे फाइंड आउट करें? वेल, ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिख दी एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी तरह. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. सो
solution इसका क्या है कि let's say we consider y1 is equal to x1 plus x2 for some specific values and y2 is equal to x1 minus x2 once again for some specific value. Capital X1 taking a value small x1, capital X2 taking a value small x2, capital Y1 taking a value small y1 and capital Y2 taking a value small y2. Okay, इसको आप कंसिडर करें तो यहां से निकालें जेकोबियन x1 x2. देखिए हमने जेकोबियन कैसे डिफाइन किया था, पार्शियल g1 ओवर पार्शियल x1. सो पार्शियल g1 ओवर पार्शियल x1, व्हाट इज दैट, पार्शियल g1 ओवर पार्शियल x1. ये आपके पास g1 है, y1 is g1 of x1 and x2. So what is the partial derivative of this guy with respect to x1? Answers in the chat window. Partial derivatives of this expression with respect to x1. Partial derivative का मतलब x2 constant हो जाएगा उसमें. So this would be 1. And the partial derivative of g1 with respect to x2 is also 1. Partial derivative of g2, which is this guy, second guy here, partial derivative of g2 with respect to x1 is 1. And with respect to x2 is minus 1. With respect to is minus 1. And this answer turns out to be, this determinant turns out to be minus 2. This determinant turns out to be minus 2. Non-zero. ये कब जीरो होता, अगर हमारे पास ये जो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये प्लस होता तो ये आंसर आपके पास जीरो आता. एंड यू कैन सी कि अगर आपके पास y1 जो है वो भी x1 plus x2 है और y2 भी x1 plus x2 है, then it would be hard to solve those two equations which are exactly the same. Which means कि y1 और y2 जो है वो दो different random variable नहीं है, वो एक ही random variable है. But in this case, they are two different random variables. Now, I can also find x1 and x2 in terms of y1 and y2. वो आप कैसे भी find करने हैं कि y1 y2 is equal to, this is 1 1 1 minus 1, so x1 x2, इसको आप inverse करें, so x1 x2 is equal to 1 1 1 minus 1, इसका inverse लें और y1 y2, then you will end up getting x1 is equal to y1 plus y2 over 2 and x2 is equal to y1 minus y2 over 2. और ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते तो वहां से भी हमारे पास x2 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 2x1 आ जाता ऑन द राइट साइड एंड y1 प्लस y2 हियर, तो वहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे. या मैट्रिक्स किसी भी तरीके से एक्सप्रेस x1 and x2 in terms of y1 and y2. Okay, now I am ready to write the joint PDF of y1 and y2, and the joint PDF of y1 and y2 I will use this expression. Okay, joint PDF of y1 and y2 would be equal to the joint PDF of x1 and x2 multiplied by the Jacobian of transformation inverse, okay, or uski magnitude value. So the joint PDF of y1 and y2, y1 comma y2 is equal to nothing but the joint PDF of x1 and x2 evaluated at x1 and x2, but यहाँ पे मैं x1 x2 चले अगर लिख भी देता हूँ, I cannot just write like that. So ये -2 का जो है, -2 का मैग्नीट्यूड इनवर्स ले लें, तो ये तो 1/2 बन जाएगा, ये तो आपके पास 1/2 बन जाएगा. What is this guy? देखें, we are talking about the joint PDF of y1 and y2 should be written in terms of as a function of small y1 and small y2. वहां पे हमारे पास x1 x2 नहीं आने चाहिए, वहां पे हमारे पास x1 x2 नहीं आने चाहिए. सो जो भी PDF x1 और x2 का जॉइंट PDF बनता है, वहां पे ऑब्वियसली x1 और x2 अपीयर हो रहा होगा. जहां पे x1 अपीयर हो रहा होगा वहां पे x1 की जगह y1 plus y2/2 लिख देंगे और यहाँ पे y1 minus y2/2 लिख देंगे. So you can see that on the right hand side this guy is a function of y1 and y2, which actually should be the case because we are talking about the joint PDF of y1 and y2.
There is couple of more examples जो notes के अंदर दी गई हैं. So you have a rectangle जिसकी length और width आपको दी गई है, उसका area और parameter आपने मालूम करना है. Length and width they are random variables. So obviously area और perimeter जो है, both of these area and perimeter both will be dependent upon the length and width. And if the length and width are random variables, then area and perimeter will also be random variables. And you are asked to write the joint PDF of those. ये working example है, ये हमने दी हुई है class notes के अंदर. So please take a look at that. Please take a look at that. So I'm going to move on to another interesting topic, which is expected value of sum of random variables. हमें पता है कि expectations linear होती हैं, and the expected value of the sum is the same as sum of the expected value. But we will extend this topic a little bit. So if you recall कि expected value of some function of a random variable, ये हमने define की थी minus infinity से plus infinity तक integrate करें g of x into the density function of x dx. ये single के case में थी, ठीक है. What about a function of two random variables? Exactly इसको extend कर देंगे. G of x comma y, this is given by integral over x and y, g of xy into the joint PDF of x and y, dx या dy dx जो भी लिखना. Now case 1 consider करें कि gxy is equal to x plus y. gxy is equal to x plus y. Put in this expression. इस expression में डाल दें and you will see very easily कि ये आपके पास क्या आ जाएगा. Expected value of x plus y would be equal to integral over x and y, x plus y fxy xy dy dx. So इसमें से आप इंटेग्रल x इंटेग्रल y, ये x fxy xy dy dx इसको अलग कर लें प्लस x y y fxy x y dy dx इसको अलग कर लें. ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये x plus y जो था इसको उससे मल्टीप्लाई किया. नाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि ये जो x है ये इस y वाले से बाहर आ सकता है, इस y वाले से बाहर आ सकता है. why? Because this is an integral with respect to y. तो उसके लिए तो x मैं बाहर खींच सकता हूँ. So x को अगर बाहर खींच लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये x को आपने बाहर खींच लिया एंड अंदर यू हैव y fxy xy dy dx plus similar thing here. कुछ इसी तरह का काम वहां पे भी करेंगे. Now this is equal to in x, and please recognize what is this. Answers in the chat window. ये क्या चीज है? Integral over y, the joint density of fx comma y, joint density को आपने integrate करना है over y. This is the marginal PDF of x. This is the marginal PDF. y को आपने इंटीग्रेट आउट कर दिया जॉइंट में से, तो पीछे क्या बच गया? पीछे आपके पास you are left with the joint PDF of x dx प्लस इसी तरह की चीज यहाँ पे बचेगी और वो होगी y fy of y dy. And recognize कि what is this guy? This is nothing but the expected value of x. And this is expected value of y. So expected value of the sum of the random variables is equal to the sum of the expected value of random variables. ये तो 2 के केस में, 3, 4, 5 सब के केस में चलेगा. And very importantly, this is true even if x and y
are not independent. हमने कहीं assume नहीं किया कि ये independent होने चाहिए. हमने कहीं ये assume नहीं किया कि ये independent होने चाहिए. So ये वो वाला केस था कि जी एक्स वाई जो है x प्लस वाई था. ठीक है. दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि जी एक्स वाई इज x multiplied by y. X multiplied by y. So expected value of x multiplied by y would be equal to integral over x, integral over y, x, y, f, x, x, oops, x comma y, dy, dx. Okay. Now, it would be hard to solve this just like that, but I can do some simplification. If x, y are independent, अब मैं assume कर रहा हूं, if x, y are independent, then I can write f x, y, x comma y as the product of the two density functions, two marginal density functions. The joint is the product of the marginal. Under this condition, then under this condition, expected value of xy would be equal to integral x comma y f x x f y y dy dx. ये दोनों जो है इंटीग्रल्स आप आहिस्ता ये अलग कर सकते हैं. इसको लिख सकते हैं x into f x x dx into y f y y dy. And this is nothing but expected value of x, expected value of y. Aha. So expected value of x and y, this will turn out to be equal to the product of the expected value only if independent. Only if independent. क्योंकि अब हमने assume किया कि independent, तभी तो हम ये इनको separate out कर सकते थे. Otherwise separate out नहीं कर सकते. So there is an example in the notes. वो notes हम अभी upload कर देंगे after the class, maybe a couple of hours after the class. I have to fix a few things in the notes. तो उसमें से देखिएगा कि see example. So now we know how to handle the expected value of the sums of the random variable and the products of the random variables. Expected value of the sums of the random variable and expected value of the products of the random variables. Okay. Using these tools, I'm going to try and quantifying the dependence between random variables. What that means, कि देखें, we have been talking about that two random variables x and y, are they independent or are they not independent? We always get a Boolean type of an answer. Okay, they are independent or they are not independent. Okay? But I am trying to figure out कि इस dependence को कोई उसकी extent भी बता दे कि बहुत ज़्यादा dependent है या moderately dependent है या बिल्कुल कम dependent है या dependent है ही नहीं. So can we put a number to the dependence between the random variables? And we have a tool to do that. We have a tool to do that. So I'm going to extend this result here first, and the claim is expected value of g of x, expected value of g of y. This can be written as expected value of g of x into expected value of, oops, एक को तो थोड़ा डिफरेंट कर ली, ये h of y, h of y.
And obviously the simplest example is g of x is equal to x, h of y is equal to y. G of x is equal to x, h of y is equal to y. So if independent, otherwise this may or may not be true. If they are independent, then this is true. If this is true, then it is not necessarily true that they will be independent. Vice versa may not be true. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें बराबर आ जाएं, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें बराबर आ जाएं, but they are still not independent. ये तो हमें पता है कि अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हम ये टर्म्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एक्स और वाई की पीडीएफ्स को, मार्जिनल्स को अलग-अलग कर दिया, ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये जी ऑफ वाई हो जाएगा, एंड यू कैन इजीली राइट. सो if the random variables x and y are independent, we can easily prove कि this is true. ये हमने स्पेशल केस के लिए प्रूफ भी किया ऊपर. Okay? But vice versa is not necessarily true. It may happen कि expected value of g of x, h of y will turn out to be equal to expected value of g of x into expected value of h and y. Vice versa may not be true. Okay? And there are two examples, एक discrete के केस में और एक continuous के केस में, जो हमने नोट्स में दी हैं, जहां पे we show that कि x and y they are not independent, but this relationship is still true. एक उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि if you have a unit circle and x and y they are uniformly distributed over this unit circle. यूनिट सर्कल हो या एक सर्कल ऑफ रेडियस r हो, r को हम 1 भी ले सकते हैं, यूनिट सर्कल में r is equal to 1. So if there is a circular region and the density function of x and y is uniformly distributed over this region, ये एक ऐसी एग्जांपल हमने पहले भी की थी. So इस रीजन के ऊपर ये uniformly distributed है, then x and y they will be dependent. Given some fixed value of x, y की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस लाइन के ऊपर होगी. Another fixed value of x, y की डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी लाइन पे होगी. So you can see कि given some value of x, the distribution of y will change. And that is why there will be a dependence between y and x. Okay? But we will show that कि इस तरह के केस के अंदर जहां पे ये यूनिफॉर्म और इस तरह के सर्कुलर रीजन के अंदर सिमेट्रिक में, this thing will be true. Okay? Expected in this case, expected value of x and y specifically would be equal to expected value of x, expected value of y, but not independent. But x and y not independent. But x and y are not independent. Okay. Now, how do I quantify this dependence and independence between the random variables? First of all, think about what do we mean by dependence? What do we mean by dependence or independence? Dependence का मतलब क्या है? Dependence का मतलब ये है कि if two random variables are independent, knowing the value of one random variable will not tell you anything about the other random variable. If the two random variables are dependent, then knowing about one random variable will tell you something about the other random variable. Okay. Knowing the value of one random variable will tell you something. हमें ये नहीं पता कि क्या चीज होगी, but will tell you something about the other random variable. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की है, if I tell you the value of x, so let's say कि ये वैल्यू है x की, this black dot, ये जो मैंने यहाँ पे किया, if I tell you कि x takes this value, then you exactly know कि y will have a distribution between this line, this and this.
ये इस लाइन के ऊपर, ये जो मैं ब्लैक कर दी है, इस लाइन के ऊपर y की डिस्ट्रीब्यूशन होगी. इफ आई टेल यू सम अदर वैल्यू ऑफ x, इफ आई टेल यू सम अदर वैल्यू ऑफ x, ये जो है ये मैंने ग्रीन में कर दी है, ग्रीन डॉट किया. इफ आई टेल यू कि x takes this value, then y will have a distribution between this value and this value. ठीक है. एंड यू कैन सी कि y की जो वैल्यूज हैं, हम बता सकते हैं कि y किस और किस वैल्यू के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, knowing the value of x. So I am able to tell something about y when I tell you some value of x. अगर value of x को हम बता दें, so you can tell me something about y. Okay. If that is the case, then there is some dependence between x and y. There is some dependence between x and y. Okay. If knowing one random variable you cannot tell anything about the other random variable, then they are independent. They are independent. By the way, f of x given y, we know that this is given by xy over fyy. Okay. If xy independent, if x and y are independent, then f of x given y would be equal to, if they are independent, that means कि ये वाला जो है आपके पास, ये आपके पास फैक्टर हो जाएगा fxx fyy divided by fyy, which is nothing but fxx. ऊपर से ये और ये कैंसिल हो गए. So that means the conditional PDF of x given y is the same as the marginal PDF of x. And that makes sense. That makes sense. क्योंकि x जो है वो independent है y से. X independent है y से. Now, I'm going to now define a quantity, a parameter or a quantity which is called covariance. Covariance. Okay. Mean and variance, they tell us something about a single random variable. ये हमें बताते हैं एक रैंडम वेरिएबल के बारे में कि एक रैंडम वेरिएबल का मीन आपको बताएगा कि रैंडम वेरिएबल व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट द वेरिएबल कैन टेक. वेरिएंस क्या बताती है? वेरिएंस बताती है कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल टू मूव अवे फ्रॉम द मीन, कितना अवे कर भागने की कोशिश करता है. सो mean and variance are the parameters which provide us information about a single random variable. These are the quantities which tell you something about a single random variable. Covariance provides information about the dependence between two random variables. Okay. This provides info on the dependence between two random variables. And it is defined as covariance of x comma y is equal to expected value of x minus expected value of x multiplied by y minus expected value of y. और इसको अगर ओपन करें एक्सपेक्टेड वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करें, यू विल एंड अप गेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई minus expected value of x into expected value of y. So this is covariance of x and y. If x comma y independent, if they are independent, then covariance of x comma y is equal to, क्या आ जाएगी आपके पास? Answers in the chat window. It will be 0. Why? Because this guy would be equal to this guy. ये तो हमने देखा है. ठीक है. लेकिन if covariance between x and y is equal to 0, does not necessarily mean that x and y are independent. Does not necessarily, they can be independent, but it's not necessarily true. It's not necessarily true. So one more thing that I want to point out here is that from the definition of covariance, is definition को अगर देखें, so if I ask you what is the covariance between x and x, and obviously x and x are 100% dependent, बहुत ज़्यादा dependence है इनके बीच में. This is nothing but variance of x. क्यों?
कि this would be x minus expected value of x and x minus expected value of x, उसका square हो जाएगा, and that is the definition of the variance of x. Covariance of between x and x is nothing but the variance of x. Okay. So if x and y they increase together or decrease together, then the covariance is greater than 0. Covariance between x and y is greater than 0 if x and y increase together or decrease together दोनों cases में, ठीक है. If they move in the opposite direction, if x increases and y decreases, then covariance would be less than 0. Covariance between x y less than 0 if x y move in opposite directions. इसका मतलब क्या है कि x की अगर हायर वैल्यूज लेती हैं तो y की लोअर वैल्यूज की टेंडेंसी ज्यादा होगी. एंड पिक्चोरियली you can show it pictorially you can show that if you have two random variables x and y which can take some values, ठीक है, कोई उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की है, you know, so each of the points x takes this value. आपने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, उसमें आप ये रैंडम वेरिएबल जनरेट करते जा रहे हैं and they take values like this. ये इस तरह की वैल्यूज हैं, ये डॉट्स जो है ना, ये सारे आपके जो है ना इंस्टेंसेस हैं. सो यू परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, यू जनरेटेड एक्स एंड वाई. तो एक वैल्यू एक्स की आई, एक वैल्यू वाई की आई, उसको इस 2 डायमेंशनल प्लॉट पे प्लॉट कर दिया, 2 डायमेंशनल इसके ऊपर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दिया. सो इन दिस केस यू विल नोटिस इन दिस केस यू विल नोटिस कि आपके पास जो है ना, ये देखें, ये यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि एक्स इंक्रीज होता है तो टेंडेंसी ऑफ वाई is to increase. X decrease. Lower values of x mean that lower values of y are more likely. So this is the case when covariance between x and y is greater than 0. Less than 0 के लिए आपके पास ये इस तरह के सैंपल पॉइंट्स आएंगे, इस तरह के पॉइंट्स आप जनरेट करेंगे, नॉट सैंपल पॉइंट्स, इस तरह के पॉइंट्स आप जनरेट करेंगे between x and y. So जब आपने एक्सपेरिमेंट रन किया तो उस एक्सपेरिमेंट की कोई आउटकम आई, उस आउटकम से आपने x और y जनरेट किए, उनकी वैल्यू जो भी आई उनको आपने इस 2D प्लॉट में आपने मार्क कर दिया. और इन दिस केस यू विल नोटिस कि ये आपके पास देखें, टेंडेंसी ऑफ x एंड y आर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हायर वैल्यूज ऑफ x लीड टू लोअर वैल्यूज ऑफ y, that y will have a tendency to take lower values. Great. So in this case, the covariance between x and y would be less than 0. So if two random variables x and y are independent, the covariance would be 0. If they are independent, the covariance would be 0. If the covariance is 0, not necessarily independent. So independence is a much stronger thing. So some of the covariance relationships I'm going to write here is covariance of, we already saw, of x, y. This would be the same as covariance of y, comma x. ये उसकी definition से पता चल जाता है. And covariance between x and x is variance of x. Also, covariance of ax by, where a and b are constant, is nothing but covariance of x comma y. ये भी उसकी definition के अंदर values डाल के easily prove कर सकते हैं. And similarly, covariance of summation I is equal to 1 to n aixi comma summation j is equal to 1 to m b j y j. ठीक है, यही आपके पास जो है ना, sum of the random variables weighted by some constants and sum of random variables weighted by some other constants, this would be equal to summation I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to m, ai b j, covariance of xi y j.
Using this, you can find the variance of sums, sums of random variables. And the variance of sums of random variables, there is an expression for that. ये हमने दो steps के अंदर ये solve कर सकते हैं. Given in the notes, I'm just going to write this down for some intuitive explanation. I is equal to 1 to n xi. This is nothing but covariance between I is equal to 1 to n xi, j is equal to 1 to n xj. ठीक है, so यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये फॉर्मूला लगा दें तो आपके पास this will turn out to be summation I is equal to 1 to n variance of xi plus 2 times double summation for I less than j covariance between xi and xj. So variance of the summations of xi, variance of the summations of xi would be the summation of the variances plus these covariance terms, Now, if I ask you, okay, what if xi's are independent, are pairwise independent? Each xi is independent of any other xi. Each xi is independent of any other xi. Then the covariance between these guys will be 0. Okay, if xi is independent of xj for all ij, then variance of this sum I is equal to 1 to n xi would be equal to sum of the variances. ये हमने रिलेशनशिप पहले भी देखा, प्लस 0. कोवेरियंस तो उनके दरमियान 0 हो जाएगी, वेरिएंस उनके दरमियान 0 हो जाएगी. Now, another quantity which is related to covariance is just a scaled version of it. It's called correlation. और correlation क्या चीज है? Correlation देखें, covariance between x and y is expected value of x minus mean value of x multiplied by y minus mean value of y. Okay. If I ask you what is the covariance between 10x and y, this will turn out to be 10 times covariance of x and y. यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें, x की जगह पे 10x डाल दें, मीन भी जो है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा, वो 10 बाहर आ जाएगा. So, but I am not interested in this. मुझे पता है कि x और y के दरमियान कोई कोवेरियंस की वैल्यू आती है. So 10x और y, मेरे लिए 10x जो है is just a function of x. It's just a function of x. And it's a linear function of x. I want to scale this. So scale करने के लिए इसकी normalization करनी पड़ेगी by realizing कि variance of x divided by उसकी standard deviation से divide कर दें, इसकी variance कितनी होती है? Answers in the chat window. Variance of x divided by sigma x. Remember हमने normal के केस में किया था, मीन को माइनस किया, उसकी standard deviation से divide किया, तो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल आ गया था जिसका मीन 0 था और वेरिएंस 1 थी. यहाँ पे हम मीन तो नहीं माइनस कर रहे, लेकिन हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो द वेरिएंस ऑफ दिस वुड बी वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर which is 1 because sigma x square is the variance of x. Okay. Similarly, variance of y over sigma y will be equal to 1. So I define the correlation rho xy, correlation coefficient भी बाज़ दफा कहते हैं, rho xy is nothing but covariance scaled x divided by sigma x, y divided by sigma y. अच्छा, इसका फायदा क्या है? एक चीज हमने कोवेरियंस पहले डिफाइन कर दी है, तो दोबारा एक और कोरिलेशन जो है उसको नॉर्मलाइज करके क्यों डिफाइन कर रहे हैं? इसलिए डिफाइन कर रही है क्योंकि इफ आई ट्राई टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन 10x and y, okay, you will see that this is the covariance between 10x divided by
standard deviation of 10x y over sigma y. And what is the standard deviation of 10x? Standard deviation of 10x is nothing but this is equal to 10 times standard deviation of x. So ये आपके पास basically covariance of x over sigma x, y over sigma y, which is the same as the correlation between x and y. Very interesting. Okay, इसका मतलब है कि correlation between 10x and y is the same as the correlation between x and y. इसका मतलब है वो scaling से फर्क नहीं पड़ता, except for the negative terms. कि correlation between, let's say, minus 3x and y would be equal to minus correlation between x and y. When correlation is 0, that means they are uncorrelated. उस time covariance भी आपके भी 0 होगी. Correlation greater than 0 means कि if one random variable increases, the other will also increase, and if one decreases, the other will also decrease. Okay. We can prove that the correlation between two random variables has a maximum value and a minimum value, and the minimum value is -1. Always the correlation is always less than equal to 1 and greater than equal to -1. Always between -1 और +1 के बीच में होता है, हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है. Okay. So I will give you a very quick example in 1 minute, in 2 minutes maybe. So x, y, z, let's say they are IID normal 0, 1, independent, identically distributed, normal 0, 1. I define u to be equal to x plus y and v to be equal to x plus z. अब देखें u जो है उसके अंदर y और z आ रहे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो y और z हमें बता रहे हैं कि u और v को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट उसमें हमने एक x को कॉमन इन सब को ऐड कर दिया. Okay, so x is the common factor between u and v. So x and y, they equally contribute to u. इसी तरह x and z, they equally contribute to v. Okay, so it seems that intuitively ऐसा लगता है कि अगर ये u जो है आपके पास u is equal to y और v is equal to z होता, तो u और v जो है वो इंडिपेंडेंट होते, अनकोरिलेटेड होते. लेकिन अब ऐसा नहीं है. हमने ये बीच में एक x दोनों साइडों पे ऐड कर दिया है, and x is the common factor. Knowing something about u will tell you something else about v. वो v के बारे में भी कुछ बता देगा, शायद बहुत ज्यादा ना बता सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो बताएगा. ठीक है. So u and v, they seem to be positively correlated because of the presence of this guy x. Okay. And you can find the covariance between u and v after a little bit of manipulation, जो हमने notes के अंदर आपको show कर देंगे. The covariance between this guy is 1. The covariance between u and v is 1, and the correlation between u and v is 1 over 2, and this makes perfect intuitive sense. कि देखें आपने x और y को ऐड कर दिया, x और y दोनों में एक जितनी पावर है, दोनों नॉर्मल 0, 1 है. इसी तरह x और z ऐड कर दिया, x और z में भी एक जितनी पावर है. सो एक तो आपके पास ये इंडिपेंडेंट वाला कंपोनेंट है y और z का, और एक ये डिपेंडेंसी वाला कंपोनेंट है x वाला, और डिपेंडेंसी वाले कंपोनेंट की उतनी ही पावर है जितनी इंडिपेंडेंट वाले कंपोनेंट्स के. सो द कोरिलेशन बिटवीन u and v turns out to be 1 over 2. अगर आपके पास एक और क्विक सी एग्जांपल, maybe 1 minute में, if you had x which is normal 0 and sigma naught square, y which is normal 0 sigma 1 square, and z which is also normal 0 sigma 1 square. ठीक है. अब अगर आपके पास u is equal to x plus y हो and v is equal to x plus z ho, so these are all independent, not identically distributed, these are all independent. So अब देखें कि u और v में ये दो तो ये इंडिपेंडेंट वाले फैक्टर्स हैं, y and z, उनकी पावर है sigma 1 square, and then there is this common factor x, which has a power of
of sigma naught square, which may be smaller than sigma 1 square or greater than sigma 1 square. If sigma naught square is greater than sigma 1 square, intuitively we expect u and v to be more correlated than 1/2. We expect rho u v to be greater than 1/2. इंट्यूटिवली हमें ये लग रहा है कि वो 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, अदरवाइज वो उसको कम होनी चाहिए. एंड इनफैक्ट वी कैन शो दैट, और ये नोट्स में शो भी किया है कि इन दिस केस द कोरिलेशन बिटवीन u and v is 1/1 plus sigma 1 square over sigma naught square. Sigma 1 square over sigma naught square. ठीक है. Okay, so this finishes our discussion on the basic probability material. There is one topic that I will assign for reading. We already talked about conditional expectation. Conditional expectation, अगर सबको याद हो या नहीं भी याद हो, तो हमने उसमें कहा था conditional expectation में expected value of x is equal to expected value of x given y, where x given y is a function of y, इसी तरह जिस तरह conditional expectation होती है, इसी तरह there is something called conditional variance, and the conditional variance, you can derive the formula for that is variance of x is expected value of variance of x given y plus the variance of expected value of x given y. This is also shown in the notes, and there is an example of that. So I am going to assign this assigned for homework. I don't think that there is a question which is given in the assignment which relies you to know this formula, but just take a look at that. It would be given in the notes. I will upload the notes as soon as they are ready today, and will upload the lecture again when it becomes available. If there are any questions before I close the session today, I will be happy to answer. Sir, take the question then. जी अवैस. जी सर. सर एक तो ये कि अब मुझे जो क्लियर नहीं हुआ कि जैसे आपने कहा था कि कोवेरियंस है हमारे पास, फिर भी कोरिलेशन को हमने क्यों डिफाइन किया है, थोड़ा सा ये बता दें. और एक वो जो हमने पीछे पढ़ा था बाइवेरिएट चेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल. जी. तो कोवेरियंस हमने कोवेरियंस के होते हुए कोरिलेशन क्यों डिफाइन किया, हालांकि लग रहा है कि एक जैसी चीजें हैं. सो correlation जो है is the same thing as covariance, except कि ये जो random variables हैं उनको हम normalize कर देते हैं, उनकी हम variance को 1 बना देते हैं. So ये x एक random variable है जिसकी कुछ भी variance हो सकती है, लेकिन x over sigma x जो है उसकी variance हमेशा 1 होती है. x over sigma x की variance हमेशा 1 होती है. तो इसको normalize करने का ये फायदा हुआ कि आपके पास जो covariance जिसकी value कुछ भी आ सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है, correlation जो है will always be between +1 and -1. ये confine हो गया है. इससे हमें जो है ना वो एक standardized टाइप का आंसर मिल जाएगा. अब मैं अगर बताऊं आपको कि 0.75 correlation है दो random variables के दरमियान में, you can pretty much guess कि कितनी डिपेंडेंस है उसके अंदर ना, rather than कि अगर मैं कहूं कि कोवेरियंस उनके दरमियान 75 है तो पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइज होके कितनी बन जाएगी. ठीक है. Does that answer your question? जी सर. सर वो बाइवेरिएट चेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल. जी बाइवेरिएट चेंज के ऊपर भी आ जाती है. सो बाइवेरिएट चेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स में, नाउ इन दिस केस you are given two new random variables y1 and y2, in terms of two old random variables x1 and x2. जो x1 और x2 ये आपके पास
वो रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन आपको दिया गया है, जो आपको पहले से मालूम है उनका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन. एंड नाउ यू आर डिफाइनिंग y1 and y2 as functions of x1 and x2, and you are interested in the joint density function of y1 and y2. ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे मैं आपसे कहूं कि y is a function of x. अगर x का पीडीएफ दिया हुआ है तो क्या y का पीडीएफ मालूम कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, हमने उसका प्रोसेस डेवलप किया हुआ है. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अगर अब मैं आपसे कहूं कि आपको x1 और x2 का जॉइंट पीडीएफ दिया गया है and y1 and y2 are the functions of x1 and x2, can you find the joint pdf of y1 and y2? The answer is yes. तो उसका भी जो प्रोसेस है वो हमने उसका प्रूफ तो नहीं किया है, but we can find the joint pdf of y. In fact हमने सिंगल वाले के केस में तो प्रूफ भी कर दिया था कुछ हद तक, नॉट वेरी रिगोरस बट हैंड वेवी प्रूफ था. बाइवेरिएट के केस के अंदर जो है वो the proof is similar. So बाइवेरिएट के केस में अब हमने y1 और y2 का जॉइंट पीडीएफ निकालना है, x1 x2 का जॉइंट पीडीएफ दिया गया है. ठीक है, so the way that you do it is first you find the Jacobian, and if the Jacobian turns out to be 0, अगर Jacobian 0 निकल आता है तो फिर तो आप निकाल नहीं सकते, फिर आप नहीं निकाल सकते. ये जॉइंट पीडीएफ y1 y2 का आप नहीं निकाल सकेंगे. You can find the joint PDF of y1 and y2 when the Jacobian is non-zero. So Jacobian आपने निकाल लिया और उसके बाद आपने ये जो एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं y1 और y2 की in terms of x1 and x2, इनको इन्वर्स करना है. इनको इन्वर्स करना है मींस कि x1 को y1 और y2 की टर्म्स में लिखना है और x2 को भी y1 और y2 की टर्म्स में लिखना है, जो हमने यहाँ किया, जो हमने यहाँ पे कर दिया. वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल वेज. ये मैट्रिसेस को यूज करके कर लें या डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करते, इक्वेशन 1 और 2 को और सब्ट्रैक्ट करते, तो x1 और x2 को आप लिख सकते थे इन टर्म्स ऑफ y1 and y2. So then the joint density function of y1 and y2 can be written in terms of the joint density function of x1 and x2, where x1 and x2 are substituted by equivalent values of y1 y2, जो भी उनकी टर्म्स में आती हैं, multiplied by the inverse of Jacobian. So अब बताएं इसमें आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है? ये मैंने पूरा ही रिपीट कर दिया. सर क्लियर हो गया मुझे, शुरू से थोड़ी कंफ्यूजन थी, वो आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू. चलें, ग्रेट. So any other question इसके बारे में before I close the session? No more questions? Okay, I'm going to close the session now. We'll upload the video when it's ready. Okay, thank you very much.